Hello, good morning. Today I am present a new topic, that is amenorrhea. Amenorrhea, or in Hindi Ritu Rodh. So what is amenorrhea? Amenorrhea is absence of menstruation during reproductive life. Absence of menstruation during reproductive life is pathological और फिजियोलॉजिकल. किसी भी महिला के प्रजनन काल में ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव टाइम menstruation is physiological if it absence during menstruation, during lactation. Lactational amenorrhea present in some cases or in some females, not in all females. Menses absent after menopause and during pregnancy. So if we treat a case of sterility in which amenorrhea may be present. So menstruation is cyclical discharge of unfertile ovum and cast of endometrium by per vagina during reproductive life of a female at an interval of about 28 days. लेकिन ये अगर इरेगुलर हो जाए, अनियमित हो जाए या एब्सेंस हो जाए. Nor do we know why in the reproductive economy, omena and monkey are the sole member of God's creation to be afflicted with this inconvenience. This is the statement given by Wharton. Cyclical discharge of blood per vagina during reproductive life, which contains endometrial cast, dead ovum and bacteria. It is absent before puberty, during pregnancy, during lactation and after menopause. According to Bhav Prakash, that is standard books in Ayurveda, menstruation is unfertile abortion of the unpregnant residua. It is the uterus weeping for the death of an unfertilized ovum. So we see definition of amenorrhea. Absence of menstruation during reproductive age is amenorrhea. Amenorrhea is of two types, physiological amenorrhea and pathological amenorrhea. Physiological amenorrhea present before puberty, during pregnancy, during lactation in some times and after menopause. प्यूबर्टी से पहले, गर्भावस्था के दौरान और स्तनपान, लैक्टेशन, स्तनपान कराने के समय कुछ महिलाओं में ये एब्सेंट होता है. एंड आफ्टर मेनोपॉज. Pathological amenorrhea is of two types, primary and secondary. Primary amenorrhea means
एज 16, 17, 18 वर्ष का हो गया लेकिन एक बार भी मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है, नॉट ए सिंगल टाइम menstrual bleeding appears. And in secondary amenorrhea or pathological amenorrhea is grouped in such type of cases when first time menses appears for few months or few years, or even first conception occurs, first delivery is present. After that, absence of menstruation is included in secondary pathological amenorrhea. So causes of amenorrhea divided into following groups. Number 1 is uterine causes, cause related to uterus, rudimentary uterus, infantile uterus, hysterectomy, subinvolution, radiation by X-ray or radium, refractive endometrium. Rudimentary uterus means एज के अनुसार यूट्रस का साइज न होना, नॉर्मल यूट्रस का साइज ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज और आफ्टर प्यूबर्टी इज 3.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंच, मीन्स 3.5 इंच ये लंबा, 2.5 इंच चौड़ा और 1.5 इंच मोटा होता है इसकी मोटाई। ये नॉर्मल है, इसमें 1/2 इंच प्लस माइनस हो सकता है बॉडी के साइज के अनुसार। अगर इस साइज से कम है, छोटा है, एकदम छोटा, बर्ड लाइक और इन बर्डिंग फॉर्म, दैट इज रूडिमेंट्री। एंड इन्फेंटाइल मीन्स 18 साल, 19 साल, 20 साल के एज में महिलाओं में अगर 7-8 साल के उम्र जैसा यूट्रस का साइज है, वो अगर आप वहाँ मिलता है, दैट इज रूडिमेंट्री, दैट इज इन्फेंटाइल यूट्रस। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूडिमेंट्री यूट्रस एंड infantile uterus. For in detail, you see the development of uterus according to age. You also read Pocket Manual of Obstetrics and Gynecology, including infant hygiene by Dr. Ram Naresh Kumar. So these are the causes related to uterus: rudimentary uterus, infantile uterus, hysterectomy, superinvolution, radiation by X-ray or radium, refractive endometrium. This is the diagram of different types of uterine abnormalities: normal uterus, uterine hypoplasia, unicornuate uterus and septate uterus. These all included in congenital Mullerian anomalies. May be absence of uterus. May be absence of uterus. In that condition, vagina is present, cervix is present, but absence of uterus, may be fallopian tube and ovaries present. Ovarian causes: ovariectomy, X-ray exposure, bilateral tumor in ovary, aplastic or hypoplastic ovary, persistent corpus luteum, polycystic ovary और polycystic ovary of metropathia hemorrhage का। So these causes included under ovarian causes or may be absence of ovary. Endocrinal causes:
Cause related to endocrine, anterior pituitary causes. Anterior pituitary causes includes Cushing syndrome, Simpson's disease. In Cushing syndrome, symptoms due to tumor in anterior pituitary or adrenal cortex, it produces amenorrhea, hirsutism, hypertension, glycosuria and obesity, loss of pubic or axillary hairs. So, in Cushing syndrome, amenorrhea, hirsutism, hypertension, glycosuria and obesity, loss of pubic or axillary hairs. Simpson's disease. It occurs due to necrosis of anterior pituitary, loss of libido, falling of pubic hair. This is the diagram of polycystic ovarian disease and anterior pituitary tumor. Pituitary dwarfism, dwarf, amenorrhea and undeveloped sex organ. Froehlich syndrome, functional disorder of anterior pituitary. Froehlich syndrome, also called adipocogenital dystrophy, rare childhood metabolic disorders, characterized by obesity, growth retardation, and retarded development of the genital organ. It is usually associated with tumors of the hypothalamus, causing increased appetite and depressed secretion of gonadotropin. So these are included under endocrinal disorders. Systemic diseases which may produce amenorrhea, pulmonary tuberculosis, chronic nephritis, anemia, leukemia, obesity, diabetes mellitus. Nutritional causes include malnutrition, faulty in absorption. Malnutrition, जो प्रॉपर डाइट मिलना चाहिए वो होता नहीं है, मिलता नहीं है, और फॉल्टी इन एब्जॉर्प्शन, वो जो खाना ले रहा है उसका इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो है उसे प्रॉपर एसिड ऑब्जर्व नहीं कर रहा है. साइकोजेनिक कॉजेज, नर्वस, फियर, एंजाइटी एक्सेट्रा. क्रोनिक अल्कोहलिज्म. These are the main causes related to amenorrhea. May be other causes also responsible for the amenorrhea. RE test, in investigation for finding the proper cause of amenorrhea. RE test or routine examination test. Give estrogen 5 mg daily for oral for 10 days, then stop. Withdrawal bleeding starts within 48 hours if यूट्रस इज रिसेप्टिव. अगर यूट्रस नॉर्मल है तब ये कंडीशन होता है. तो इसके लिए हम 5 मिलीग्राम एस्ट्रोजन की टैबलेट ओरल पर डे 10 दिन तक देते हैं. फिर बंद कर देने के बाद में 24 घंटे से 48 घंटे के बाद अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो हम समझते हैं कि यूट्रस नॉर्मल है. गिव 10 मिलीग्राम ऑफ प्रोजेस्टेरॉन डेली फॉर 5 days एंड स्टॉप. ब्लीडिंग स्टार्ट विद इन 48 आवर्स इफ ओवरी इज नॉर्मल. अगर ओवरी नॉर्मल है
तो इसकी जांच के लिए 10 मिलीग्राम 10 mg प्रोजेस्टेरॉन का टैबलेट कंटिन्यू लगातार हम 5 दिन तक देते हैं, फिर बंद कर देंगे। ब्लीडिंग स्टार्ट विद इन 48 आवर्स इफ ओवरी इज नॉर्मल। देन अदर टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस आर ESR, टोटल काउंट और कंप्लीट ब्लड काउंट, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड ऑफ लोअर एब्डोमेन फॉर नॉर्मल पोजीशन एंड साइज ऑफ यूटरस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी एक्सेट्रा। Treatment of amenorrhea divided into 4 parts. Number 1, general exercise, good food, change to warm climate, treatment of general diseases. Surgical, removal of new growth, DNC operations. Medicinal, embragresia, Aurum mur netronatum, borax, calcarea flor, pulsatilla, graphitis, lycopodium, merksole, pituitrinum, ovatosta, thyroidinum, tuberculinum, natrum mur, sepia, सल्फर, थूजा। इन सभी मेडिसिन को लक्षण के आधार पर हम प्रयोग करते हैं। लक्षण क्या है? इसके बाद हार्मोनल थेरापी इन एलोपैथी। सो दिस इज अबाउट एमिनोरिया। इन मैनेजमेंट हेडिंग, चेंज टू वार्म क्लाइमेट और प्लेस। In some female, we see her मैटरनल एंड पैटर्नल मीन्स उसके अपना घर और अपने मैके में, ससुराल और मैके में परिस्थितिवश कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं जिस कारण स्थान परिवर्तन की ज़रूरत होती है। स्थान परिवर्तन से भी बहुत सारी बीमारियों पर असर पड़ता है और मानसिक स्थिति। सो फॉर द चेंज इन मेंटल एटमॉस्फेयर, चेंज टू क्लाइमेट और प्लेस फॉर समटाइम्स। So in this way we see in this video definition, type, cause, investigation and management of amenorrhea. Thank you for watching. Like, share and subscribe.